Hello everyone, here you are watching Dr. Bipin Kumar, and today I am going to introduce you the topper of physical science Orco. He is the first ranker, and Rakesh is here in doing the MSc in the agriculture chemistry. So this is the fortunate that you will be interact today here with the topper of physical science. So Orko ji, I request you please give your introduction and inspire the student. Thank you, sir. Hello everyone, and very good evening to all of you. I'm here with you. I'm Orko Roy. I'm from West Bengal, and I'm studying in ICAR-IRI from this year only, that is from 2017. I've done my BSc in agriculture from Bishwabharati University, Palli Shiksha Bhavan of West Bengal. Okay. And now Rakesh, please give your introduction. My name is Rakesh Kumar. I did UG from Sardar Kushinagar Dantewada Agriculture University, Gujarat, and now I am here in IRI Agriculture Chemicals Division. Qualified the JRF examination of Physical Science Group. And I want to tell you guys, these people are not only the topper in the what you can say the ICAR-JRF. These are the topper of even BHU, I think, entrance exam also. Your rank was first, and your ranks were fourth. So this is the. Which subject are we gonna choose to crack the examination? So as in my case, I chose soil science and that is physical science group, and the reason I chose it because I loved chemistry from my school life very much, and I felt there is some kind of similarity in the syllabus of physical science and loved chemistry and the chemistry that I loved. So and please do not choose subject by others force, or others are saying you that you X choose this subject. Yeah, many times what happened, people got diverted that you should choose this, but you are very right. Follow your heart. You may be loving plant science, you may be loving genetics. Still, your seniors are telling you that go take physical science as your specialization. Don't do that. First, love the subject, then choose it. Then, when to start your preparation once you have selected your subject? I think BSc agricultural course is 4 years course. So rigorous study, very intensive study you have to do in these 4 years. So you have to first go through your courses, your course curriculum very nicely. Using course curriculum of the soil science. Yes, not only soil science, because you have to keep in mind that the group that we opt for was physical science, as sir was telling me just a few minutes ago, not soil science only, and you are not going to answer the questions of soil science. You are there are almost 50% or almost 30% questions that would be coming from general agriculture portion. Those questions will decide your ranks. So you have to study the 4-year courses, the courses in your 4-year BSc AG degree very, very carefully, so that you don't miss those general agriculture portions. Now coming to special study about physical science, there are some books that you must read, that me and Rakesh both will and that book description I will give you in the description box. From there you can write down. Yes, sir. And for your convenience, I am telling the name of those books. One is very old and very reliable book, that is Textbook of Soil Science, McGraw-Hill publication by T.D. Vishwas and Mukherjee. And there is one D.K. Das's book, Introduction to Soil Science, I think so. And ICAR publication, there is one book of ICAR publication, that is Fundamental of Soil Science. There is a new version of it. New version of 2015. 2015. I don't know that exactly, but there is a new version of it where the chapters of GPS, GIS, remote sensing are extensively included. And so these 3 books are very much
important for preparation of physical science. And there are some other minor things, other minor aspects of physical science group, that you don't have to study only soil science but also chemistry, meteorology, chemistry of 11 and 12, meteorology, and what are the other aspects? In the environmental science yes. and physiology. Okay, Both okay. चार is minor subject is most of from general agriculture. In physical science group, this physiology as well as Physiology, environmental science and meteorology and soil science. Soil science. 4 is included in paper is चारों से मिला के 80% coverage आता है ना. And then is the 20% is remaining portion. In this portion is the most of general agriculture subject is the agronomy. Then is the some brief introduction about the pathology and entomology. And in match of the following, every year question asking from the extension. Which technology, which program, sometimes matched by the year, sometimes is the scheme launched from where. Those question asking in the match of the flowing. And in soil science is the one unit is the don't describe in any book is the very widely is the remote sensing. Okay. In that they can get from that new IEEE book. New IEEE and you check out by the internet. Yes. Because in the current year JRF examination, one question asking from general knowledge. Just like ISRO launched the 114 is the highest satellite. That one question comes in JRF soil science. Okay. So you check out the remote sensing by the internet and collect those data from the internet, and also follow the IEEE new version books from where is the GIS, GPS. In 2017 JRF paper, almost 8 to 10 question from remote sensing part, GIS, GPS and some. Actually, what I am observing, actually the current scenario, the way the current scenario is going on, actually GPS and GIS is going to become a part of future agriculture. So definitely now this should be one of the focus area where definitely they will give the scope to actually give the question. Nowadays nanotechnology also includes. So nanotechnology you must in this year is I think is the 1 or 2 question come from nanotechnology because nanotechnology is the wide spread nowadays in news and applied in agriculture. तो इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके में अभी इस बार जो आपने देखा है. Okay. One thing I want to say that the aspirants should keep in mind one thing, that the trend of question setting is getting changed. Okay. The year we opt for or we were in the JRF examination hall, GPS-GIS was the main focus. Okay. But in next years or the coming years, it may not be the same. So please don't be numb. Don't be numb while studying for JRF. Don't just mug up. And another misconception that I want to say, that I want to focus, that questions never come from books. Questions never come from books. You read books, you develop your own concepts, and you solve then hundreds, umpteenth kind of questions you can solve them. Never like this line is important, this paragraph is important. Don't read like this. Many of my known person do read like this. I'm not disrespecting them, but it is not the right way for me. Just read the book, understand the reality, what paragraph and sentence want to convey. And when you are reading about GPS-GIS, as for example reading about GPS-GIS, as he said that one question came, the maximum number of satellite carried by ISRO, that was 114 or something like that. From where you are gonna know this fact? You have to keep in touch. You have to be in touch with recent things. You have to search internet. You have to go through Googles, and you have to go beyond books. For getting a good rank, you have to go beyond books. It is not just books that's gonna help you. It's your group study. It's your search in internet. It may be your discussion. It may be your guidance from seniors. I think at some extent they can be in the touch with the science portion of the newspaper also, because from where they will in physical science some students are taken from the senior's choice. Okay. But what happen in physical science, not
to any topic is remembering. You must understand any topic, just like any of the topic is asking the unit. 2 to 3 question asking from unit. You must learn the units of the soil temperature, hydraulic conductivity, ODR unit, and must remembering the scientist those discovered. Because 5 to 6 how many questions like that? 5 to 6 question come from scientists. Like exactly Scientist. fact based. This, what is the unit of this and what is the name of the Yes, scientist? one they have matching discovered? came in our time. One matching came that was entirely from unit, and that was I must tell you that it was not easy. It was tough, and the first matching in my set was that matching and some parameters and their units, and that was not easy. So you have to be prepared very well. And as he was telling that, from my personal experience, I started for 1.5 years. And means you started 1.5 years. 1.5 means years. your preparation is duration Yes, 1.5 years. Means in third year you started, I think. In between third year. Amid third year, I started my preparation. So if you are such a student that you are also giving 1.5 year or nearby time for your JRF preparation, then the division of time would be like this, that the first year, the first entire year, you must comprehend all the things. This textbooks, all the textbooks. All the textbooks you have to comprehend. You have to go through it, and you don't need to mug up data or information at that time. But keep in mind that remembering data and numbers and informations are also important for this very examination. JRF one examination. question can make a matter. In More than 10 questions come. Those are informative, not conceptual. So you have to by the side by side, you have to develop your memorizing capacity. So at the same time, Rakesh also want to say something. जैसे आप पढ़ रहे हो तो शुरुआत पहले चैप्टर से, जो कोई अगर साइंटिस्ट आ रहा है, किसने क्या टर्म दिया, तो आप एक जो ब्लैंक पेज पे बना लो, लिस्ट बना लो, सब साइंटिस्ट का लिस्ट बना लो, किसने टर्म दिया, यूनिट जितना भी है उनका सबका आप एक अलग से अपना नोट्स बना लो, ताकि ये चीजें जो रिमेम्बरिंग वाली है, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सुबह के टाइम फ्रेश माइंड से एक बार माइंड में से निकाल लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज होती है, तो रिमेम्बर करना इनका कोई और सेकंड सप्लीमेंट नहीं है, इनको तो मगअप करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें आप एक जगह लिख लो तो उससे रहेगा। जैसे इंट्रोडक्टरी ऑफ सॉइल साइंस डीके दास पढ़ते हो तो उसके पीछे ICAR-SRF हो तो उसके पीछे यूनिट्स दी रखी है, केमिस्ट्री की यूनिट्स, तो आप यूनिट्स को फॉलो करो। इस यूनिट्स में जैसे कैलोरी में कितना जूल होता है, इंटर कन्वर्जन, जैसे वन क्वेश्चन जैसे सोलर कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट का 1.94 कैलोरी पर इसका होता है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करके दे देगा, एक ऑप्शन एक वाट में दे देगा और 4 दे देगा, ऑल ऑफ दीज। तो मोस्ट ऑफ रटने वाले क्या करते हैं, ज्यादातर एक ही यूनिट पढ़े होते हैं, तो वो एक ही करके आएंगे, तो वो सोचता है 100% मेरा क्वेश्चन राइट है, पर वो गलत हो जाता है। इस चीज से आप पीछे हो जाते हो। तो हर चैप्टर को आप एनालिसिस करके सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पढ़ो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आपको समझने में हेल्पफुल करेगी डीके दास। फिर एक बार उसको अच्छे से पढ़ो विद नोट्स, अपने ओन हैंड से नोट्स बनाने की कोशिश करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नोट्स बनाने नहीं आते, तो आप ट्राई करो, एटलीस्ट सीनियर से जाके पूछो कि रेफरेंस बुक कैसे पढ़ी जाती है, कोई भी रेफरेंस बुक है उसके नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। आपको पूरी थिंक नहीं उतारनी, समझ के उसका जो आपको लगता है क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगर आपको एग्जामिनर बना दिया जाए तो आप इसमें से क्या क्वेश्चन बनाओगे, वो तभी आएगा जब एक आध बार 2 बार वो बुक को जब पढ़ लेंगे देन उसके बाद आप TD विश्वास को फॉलो करो, क्योंकि उसका थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल आपको समझ में नहीं आएगा एकदम से। वो एक NCERT है, आपको ये समझो कि उसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया फैक्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ नया फैक्ट मिलेगा। उसके बाद जैसे कुछ चैप्टर में बताता हूँ, वो डायरेक्ट आप ICAR-SRF से ही पढ़ो, जैसे पीडोलॉजी है, मिनरोलॉजी है, सॉइल फर्टिलिटी है। तो सहगल का बुक आई विल रिकमेंड, सहगल्स बुक। But if you for JRF, I think ICAR-SRF is covered. हाँ, मतलब काफी है, लेकिन मैंने जो मिस हो गया था मेरा, वो 2 बुक्स है। एक है फर्टिलाइजर के लिए रंजन बसाक का बुक, और एक है पेडोलॉजी के लिए सहगल का बुक। तो ये 2 बुक मतलब पढ़ना as per my recommendation, as per my suggestion, these two are must reads.
ओके ओके। So continue, you continue. तो और बाकी फिजियोलॉजी पढ़ो, फिजियोलॉजी को अरुण कात्यायन से, दैट्स इनफ। एनवायरमेंटल साइंस का अरुण कात्यायन में फर्स्ट पार्ट दे रखा है, उसमें से आ जाएगा। बाकी करंट ध्यान रखो, जैसे कौन सा ईयर मतलब कौन सा डे कब आता है। जैसे हमारे टाइम पे 2-3 क्वेश्चन आए थे, वर्ल्ड सॉइल डे कब है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब है। जो सोइल साइंस से रिलेटेड होता है उसके डे के एक क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल ईयर का ध्यान रखना है कि आपको अभी 2018 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2018 इंटरनेशनल ईयर कौन सा है, 17 कौन सा है। तो प्रीवियस ईयर में ऐसे पल्स का पूछ लिया। तो ऐसे ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर के होते हैं, वो आप करंट अफेयर की एक बुक पब्लिश होती है आजकल, तो बहुत पीडीएफ भी आती है, तो वो फॉलो करना आप कांटेक्ट करके सीनियर से। वो पीडीएफ एक बार लास्ट के टाइम पे जो करंट एग्रीकल्चर का है, तो वो जैसे इंस्टीट्यूट के नाम चेंज हो रहे हैं कि अभी चेंज हुआ है ना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन करंट में से डालते ही है सर। तो वो आप But one thing, don't get lost reading all these current things. Don't get lost reading Last all those time, just 1 or 2 days. You just spend 1 to 2 days reading those current things for JRF. If you are preparing for some other examination, then it's okay. But for JRF, it is not that much important to waste your time. सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है और बुक जो आपने बताया उस पे ज्यादा फोकस करना है। एग्जैक्टली क्योंकि 90% या 85 मोर देन क्वेश्चन तो आपके उसी से आने हैं। तो उस पे आई थिंक ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अनदर थिंग अबाउट जनरल एग्रीकल्चर दैट theoretically constitutes almost 50% of the questions, but practically it doesn't come more than 30%, 20%, 30%. So about general agriculture, sir, हाँ बोलिए। हाँ मैं ये भाई कितने क्वेश्चन आप ये उम्मीद करते हो कि इतना क्वेश्चन अगर कर दो तो एक रैंक ला सकता है, फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक अंडर 10 लाइक दैट? आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन 160 क्वेश्चन बताया ना, 200 टोटल 200 क्वेश्चन क्रॉस मैच मिला के 200 हो जाता है। तो अगर आप उसमें 185 हो जाते हो तो आपका रैंक सिक्योर, मतलब 185 के ऊपर 180 तक राइट हुआ तो आपका रैंक मतलब फर्स्ट टू थर्ड तो रहेगा ही, लेकिन वो लाना बहुत मुश्किल होता है। पढ़ने नहीं, कभी कभी होता है ना, एक स्टूडेंट लोग जानना चाहता है क्या मेरा एक लेवल होना चाहिए। एक क्यूरियोसिटी होता है जानने का कि भाई आपने फर्स्ट रैंक लाया तो आपके जैसे आप क्रॉस मैच सोल्व करते हो मतलब मैचिंग में अगर आपको 3 मैचिंग करेक्टली आ रहा है तो उन 3 मैचिंग को इजीली करके लास्ट 2 में अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो, तो उसमें सेम ऑप्शन भर दो, क्योंकि उसमें आपका पॉइंट 2 ही जा रहा है, लॉस हो रहा है। और एक तो सही पड़ेगा, एक भी नहीं आता, बहुत टफ एक मैचिंग आ गया, एक भी नहीं आता तो क्या करना चाहिए? सब में सेम भरना चाहिए। वो तो मतलब हो गया शॉर्टकट्स, लेकिन वो अटेम्प्ट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। एटलीस्ट 190 के देखो, पहले अटेम्प्ट्स कितना करोगे वो दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ क्वेश्चन, टफनेस ऑफ क्वेश्चन। सो इफ द क्वेश्चन इज मॉडरेट, if the question is not that tough, not that easy, then above 190 should be my recommendation to to attempt with good accuracy, so that not more than 10 questions you get wrong. Okay. So that's a tricky part. That was a tricky part for me also when I was a JRF aspirant. I used to ask all my seniors that how many questions. होता है एग्जाम देने के बाद हमारे अंदर आता है कि सर मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं, क्या मेरी रैंक कैसे आएगी? That's why I asked this question. दूसरा, आप खुद अपने हिसाब से नोट्स मस्ट खुद के नोट्स बनाओ, ना कि दूसरों के। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमेशा ऐसे रहते हैं कि सर नोट्स दे दो, सर नोट्स दे दो। पहले खुद के नोट्स बनाओ। ये तो बस एक जस्ट एक गाइडेंस, आप किसी सीनियर के नोट्स ले लो कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स बना के, क्योंकि आप लास्ट टाइम में आओगे, लास्ट 1 मंथ बचेगा तो बार बार बुक रेफर नहीं कर सकते। सिलेक्टिव टॉपिक्स फ्रॉम बुक्स, जैसे पीडोलॉजी, ये तो बात की बात है, जब हम काफी पढ़ लेते हैं तो जब और मतलब टाइम कम रहता है। जेआरएफ के लिए नोट्स बनाना इज नॉट लाइक मेकिंग नोट्स फॉर योर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, फैक्ट आते हैं ना सेमेस्टर एग्जामिनेशन। हाँ, तो जेआरएफ के लिए जब नोट्स बनाओगे, एज फॉर एग्जाम्पल तुम नाइट्रिफिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पोर्शन फ्रॉम सॉइल साइंस, फ्रॉम वेयर सो मेनी क्वेश्चंस कम. So you start making note of nitrification.
the optimum pH for nitrification, what are the steps for nitrification. Fact based. Fact based. Your note should be fact based, so that the organism involved are autotrophic, heterotropic, which organism they are. Yes. pH, name of the organism, steps involved, the energy release, how many steps, the kind of questions that come, you have to incorporate those things in your note. Okay. So be a bit intelligent about making notes. Otherwise don't make notes. If you are going to write all these things, all the things, तब तो नोट्स का कोई मतलब ही नहीं ना. आप अगर अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगाते हो तो उसका कोई दूसरा जब से मीटरोलॉजी है तो मीटरोलॉजी के काफी मतलब 10 से 15 कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन. 10 से 15 का रेशियो रहता है. तो मीटरोलॉजी आप SR रेडी जो एग्रोनॉमी की बुक आती है उसका मीटरोलॉजी पढ़ लो अच्छे से नोट्स बना के. और दूसरा सबसे बेस्ट होता है कि आपके ये BSc AG में जो सेकंड लगभग कहीं फर्स्ट में कहीं सेकंड सेमेस्टर में मीटरोलॉजी पढ़ाया जाता है वो इनफ है. और कुछ नए इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारे टाइम पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे विंड स्पीड किससे होते हैं, तो जनरली अपन पढ़ते हैं एनीमोमीटर पर, वो ऑप्शन भी नहीं था. तो कुछ चीजें मतलब नए इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे. तो वो आप थोड़ा नेट से या अपने टीचर से पूछ के कर लेना. बाकी ऐसे क्वेश्चन अगर 2-3 नहीं आते तो छोड़ दो, तो भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है. बाकी चीज पे कंसंट्रेट करना. बेसिक चीजें जो भी बेसिक बुक में बताया आपने, सिलेबस पे ज्यादा फोकस. और रिगार्डिंग मेटेरोलॉजी, you have to make a very well compiled note of meteorology. The instrument used, the height of the instruments, all these things were there. एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर की लेयर कहाँ है, मतलब किस लेयर में क्या होता है, इस टाइप का. क्लाउड क्लासिफिकेशन. दूसरा जैसे फिजिकल साइंस है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप एंटोमोलॉजी में पेस्टिसाइड का थोड़ा उसका मतलब क्लासिफिकेशन देख लेना. जस्ट क्लासिफिकेशन की कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट है और कौन सा ऑर्गेनोक्लोरीन है, उनके ट्रेड नेम्स पूछे जाते हैं फिजिकल साइंस में. तो वो चीजें देखनी क्यों. हर्बिसाइड और फंगी, जितने पेस्टिसाइड में 3 आ गए, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, तो वो कई बार क्योंकि फिजिकल साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो उसमें पूछ लिया जाता है ये चीजें. तो वो चीज भी ध्यान रखनी है थोड़ी. और बाकी ज्यादा दूसरे में जैसे LPM वगैरह इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है आज तक. हॉर्टिकल्चर का भी कोई जो बहुत बेसिक सरफेस क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल एग्रीकल्चर पूछा, जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स और तुम्हारा हॉर्टिकल्चर से ज्यादा क्वेश्चन. रिगार्डिंग जनरल एग्रीकल्चर, देयर आर सम बुक्स दैट कैन हेल्प यू प्रीवियस स्टडी. दोज आर निमराज सुंडा, बुक ऑफ निमराज सुंडा, दोनों में से देख लेना अच्छे से. वो आपके अगर कोई BHU का प्रेफर करेगा या अपने स्टेट में दे रहा है, JRF के अलावा लोग अदर भी एग्जाम देते हैं, सप्लीमेंट का ऑप्शन रखा जाता है, क्योंकि ओनली JRF पे डिपेंड नहीं होता है. तो उसमें आप 2 बुक्स मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा. बाकी कुछ के नोट्स आपके इतना बेसिक नॉलेज रहता है क्योंकि जनरल एजी का प्रैक्टिकली आता है. जैसे BHU में ऑर्को का फर्स्ट रैंक था, मेरा 4th था, तो हमने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया था जनरल एजी का. तो उसमें ये है कि आप BHU के लिए LPM है वो प्रीवियस ईयर के पेपर मिला के चले जाओ, आपके रैंक आ जाएगी. और बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो जितने हैं इसी में. मेरे लिए BHU का प्रिपरेशन बोला जाए तो मेरे लिए 4 साल का प्रिपरेशन ही है, क्योंकि BHU का क्वेश्चंस मतलब रिलेटिवली हार्ड आते हैं, टफ आते हैं रिलेटिवली. सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेरिट भी कम जाता है उसका. तो 4 साल अगर किसी ने अच्छे से ढंग से पढ़ा हो तो अच्छा हो जाएगा आराम से. लेकिन अगर भी मीडियमली पढ़ा है तो आपने जो बताया, तो वो तो बुक्स है ही सप्लीमेंटरी, अच्छे से पढ़ो. और मतलब ऑल द बेस्ट. So this was all. Yes. Thank you, Rakesh. And keep that positive mentality always up. And really this is a very. ऐसे मत सोचो कि अभी टाइम नहीं, 4 महीने बचे, अभी 13 मई को एग्जाम है, आराम से पढ़ाई करो अच्छे से. चलो उतना भी आराम मत करो, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो भी. मतलब टेंशन लेते हैं ना कुछ. टेंशन मत, मतलब जूनियर्स के फोन आ रहे, कुछ कह रहे अभी सर शुरू किया, हम JRF के लायक है या नहीं. बी इन टच विथ सीनियर्स, बी इन टच विथ योर सीनियर्स. Always that I will always tell you, be in touch with your seniors, those can help you. और एक प्रीवियस ईयर में अगर पता लगाना है तो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मेमोरी बेस की एक बुक निकाली है सोयल साइंस की, वो मैं सर को नाम बता दूंगा, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, ले लेना आप वहाँ से मिलेगा. तो उससे आप वो अगर कहीं से मिले तो आप ले लेना, उससे आपको आइडिया आ जाएगा प्रीवियस ईयर की मेमोरी बेस क्वेश्चन पेपर की आने लगी.
So this was, oh, thank you, and bye bye, and all the best. Okay.